Welcome to Science and Social Tube channel. Kindly do not forget to subscribe our channel by hitting the below subscribe button and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल साइंस एंड सोशल ट्यूब। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैंने रिसेंटली एक वर्कशॉप अटेंड किया था जिसका टाइटल था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड बायो बैंकिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। जिसका वीनू जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल बायो टेक्नोलॉजी, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शालीमार, जिसको जॉइंटली हेल्ड किया था CCMB Center for Cellular and Molecular Biology हैदराबाद एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इस वर्कशॉप में हम लोगों ने सीखे थे कौन कौन से रिसेंट टेक्निक्स हैं, रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो भी एंडेंजर्ड एनिमल्स है, चाहे वो फिश है चाहे वो वाइल्ड लाइफ है, उनको कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने एक लाइव डेमो भी देखे थे कि हाउ वी विल प्रिजर्व, हाउ वी विल एक्सट्रैक्ट, हाउ वी विल प्रिजर्व द स्पर्म फ्रॉम द एनिमल। इस प्रैक्टिकल में हम लोगों ने जो एनिमल लिया था वो रैबिट था और हम लोगों ने टेस्टीज रैबिट्स के रिमूव किए थे, उससे फिर स्पर्म्स निकाले थे और उन स्पर्म्स को हम लोगों ने अंडर इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। जो आप लोग वीडियो में देखोगे कि हाउ दी स्पर्म्स आर मूविंग, व्हाट इज देयर मोर्टेलिटी एंड अदर पैरामीटर्स भी हम लोगों ने एस्टिमेट किया था। सो आई वांट टू हियर टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी CCMB for giving me such exposure, for giving me opportunity to participate this hands-on training. Thank you very much. मिलते हैं। But if we have semen analyzer computer to assess the motility, so this is like objective assessment. If we have semen analyzer computer to assess the motility, so this is like objective assessment. If we have semen analyzer computer, they are there. Yes, assess the motility. So this is like objective assessment. If we have semen analyzer computer, they are there. Yes. Kindly do not forget to subscribe our channel by hitting the below subscribe button and press the bell icon.